Assalamu alaikum, my name is Akif Nawaz. Welcome to Tutor Time. And today we'll be talking about gerund. It is one of the most important topics of English grammar. It is also considered as one of the complex topics as well. But we'll try to understand gerund in a very simple and easy way. अच्छा, तो अगर हम देखें definition जो कि मैंने लिखा हुआ है कि gerund is a verb that ends with ing and functions as a noun. अच्छा, दो चीजें यहाँ पर है. सबसे पहले तो it is a verb. तो हम यहाँ पे साइड पे लिख सकते हैं कि we are talking about a verb. दूसरी चीज that ends with ing. दूसरी जो चीज है कि ये end होगा किस चीज पे? ing पे. And the third thing is that it would function as a noun. So हम कह सकते हैं कि when a verb acts as a noun in a sentence, that is what we call as a gerund. अब इसमें एक और चीज है कि this gerund can be in the place of a subject or it can also come in the place of an object. तो हम लिख सकते हैं कि ये subject की जगह पर भी आ सकता है हमारे पास और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है. बट जो हमारा प्राइमरी फोकस होगा वो होगा कि वेदर अ वर्ब इज एक्टिंग एज अ नाउन और नॉट. सो फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कैन आल्सो कॉल इट अ वर्बल नाउन. सो अ वर्बल नाउन इज कॉल्ड एज अ gerund. अच्छा, अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले आप देखें, द एग्जांपल इज रोमा इज पेंटिंग. So यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि this word painting is a verb because this is what Roma is performing or Roma is involved in. अच्छा, अब अगर इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं और वो ये आ जाएगा कि Roma's hobby is painting. तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि we're not talking about the action she is involved in, but here our focus is on Roma's hobby, that is the name of an action, that is painting. So यहाँ पर आप देखें it was a verb and here we have used it as a noun. So simply हम कह सकते हैं यहाँ पर कि here the word painting is a gerund because it's a verbal noun. एक और चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि इंडिविजुअली वी कैन नॉट से that whether this word is a noun, verb, pronoun, etc. unless and until it is used in a sentence. After that we can say that what is the grammatical category of this word. Grammatical category means कि कौन सा part of speech है. अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये gerund जो हमारे पास है ये आ गया है in the place of object. अब हमारे पास दूसरा रह गया that is in the place of subject कि subject की जगह पर भी ये gerund आ सकता है. So in the second example, Ali is smoking a cigarette. अच्छा, यहाँ पर आप देखें smoking, it's an action that is done by Ali. So here it is used as a verb. अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा change कर लूँ और मैं कहूँ कि smoking cigarette, smoking is injurious to health. अच्छा, अब यहां पर आप देखें in this sentence smoking is used as a verb whereas in this one it is used as a noun and at the same time in the place of a subject. So that is why we can say that this is a gerund. And why is that so? Because it is a verb that is used as a noun. So हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास gerund है. अच्छा, अब अगर मैं समराइज करूँ इस पूरे लेक्चर को तो हम कह सकते हैं कि a gerund basically is a verbal noun, means कि a verb that is used as a noun in a sentence we call it a gerund. और एक और चीज जो हमने स्टडी की है that is कि a gerund can come in the place of a subject and at the same time it can also come in the place of an object. एक और important चीज जो है वो आपने ये भी ध्यान में रखना है कि it would be in the form of ing. So I hope कि आपको समझ आ गई होगी and that's all about gerund. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना ज़्यादा ये मज़ीद आसान होता जाएगा. So if you have anything to ask, you can ask me anytime in the comment section and that's all. Take care of yourself. Allah Hafiz.